हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर लाइव स्ट्रीम। व्हाट अ मैच भाई, क्या मैच हुआ यार, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। ओ माय गॉड, एक तो स्ट्रीम यार्ड का ऊपर से वो कैसे हट गया, बट एनीवेज हु केयर्स मैन। हेलो हेलो हेलो, व्हाट अ विन। रुद्रा, व्हाट इज अप ब्रदर। हेलो हेलो। नेट रन रेट क्या है अभी देखना पड़ेगा भाई। एवरीबॉडी जो भी ट्यून इन हुआ है यार, प्लीज लाइक द स्ट्रीम, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। व्हाट अ विक्ट्री भाई, व्हाट। आपको आपको आखिरी बार कौन सा याद आता है जब आप सीजन ओपनर जीते थे, और वो भी इस फैशन में, बिल्कुल वन साइडेड रेलिंग करी है केकेआर की। ऑनेस्टली अगर पूछो मेरे से, तो जब सुनील नारिन और जिंक्या रहाणे बैटिंग कर रहे थे, आई हैड लॉस्ट ऑल होप्स। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। 10वें ओवर के बाद पता नहीं क्या हुआ ऐसा। कृणाल पांड्या, यू ब्यूटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपने प्रेडिक्शन, अपने वो दो, लाइक योर कंटेंडर्स फॉर द मैन ऑफ द मैच, बिकॉज माय कंटेंडर इज कृणाल पांड्या। अगर कृणाल ने वो 3 विकेट नहीं लिए होते, अगर वो 3 ओवर नहीं डाले होते, देयर वाज नो चांस वी वुड विन दिस मैच। एटलीस्ट अगर जीत भी जाते तो इतनी कन्विंसिंगली नहीं जीतते। कुछ इस प्रॉब्लम्स भी रही है इस मैच में फॉर आरसीबी, बट मैनी मैनी पॉजिटिव्स। अच्छी बात यह है कि कुछ दिक्कतें मिली हैं, ताकि हम जब चेपॉक जाएंगे वी विल नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, वी विल हैव समथिंग टू लुक एट। सुयश के जो पहले 3 ओवर थे दे वर प्रीटी पुअर। उसके अलावा देवदत्त पडिक्कल का नंबर 3 पे क्या वो एक रेगुलर फिट होने वाले हैं, क्या वहां पे रजत पाटीदार को ऊपर भेजा जा सकता था। देयर आर फ्यू थिंग्स टू टॉक अबाउट, बट या, हाउ इज द मूड इन द कैंप। क्या आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था ऐसा? मैन ऑफ द मैच कृणाल पांड्या सब बोल रहे हैं। वी जस्ट नीड, अब इमेजिन करो, दिस वाज नॉट इवन आवर बेस्ट 11। ये हमारा बेस्ट 11 में नहीं था, हमारा 11वां प्लेयर अभी तक खेला ही नहीं है। भुवनेश्वर कुमार इज येट टू प्ले। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। एक तो जब सबसे पहले भुवनेश्वर कुमार नहीं है टीम में, ये देखा तो दो थॉट्स थे। एक थॉट था कि बहुत ही खराब हुआ। आई यू नो वी वुड रियली लाइक आई वुड रियली लाइक हैविंग सुनील नरीन, सॉरी, भुवनेश्वर कुमार इन द साइड, क्योंकि क्विंटन डिकॉक और सुनील नरीन दोनों के अगेंस्ट उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बट ऑन दी हाइंड साइड वहां पर रासिक सलाम को मौका मिल गया, जो कि एक मेरे हिसाब, मुझे लगा कि इट वुड कम आउट एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कंसिडरिंग एक डेथ ओवर का बॉलर हमें चाहिए था और हम जगह नहीं बना पाए थे, जगह नहीं बना पा रहे थे उसके लिए। स्वप्नल सिंह को मौका नहीं दिया गया है। कैन आई जॉइन यू लाइव? यू कैन यू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम? आई वुड लेट यू इन। हाँ जी, तो उसके बाद नई गेंद से हेजलवुड बोल्ड रियली वेल, यश दयाल बोल रियली वेल। उसके बाद एक चेंज आया, यश दयाल गया, रसिक सलाम को लाने का, दैट डिड नॉट वर्क आउट। उसके बाद कृणाल पांड्या को पावर प्ले में लाया गया, दैट डिड नॉट वर्क आउट। और समहाउ इवन आफ्टर दैट ग्लोरियस स्टार्ट, 3 ओवर में 9 रन देके 1 विकेट, उसके बाद भी वी एंडेड अप कंसीडिंग 60 रन इन द पावर प्ले। हर हर एक मैच में पता नहीं कैसे सुनील नरीन हमारे पीछे पड़ जाता है, एंड दिस वाज अनदर वन ऑफ दोज मैच। आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू गाइस, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू दैट।
उसके बाद आई थिंक हु टुक द ब्रेक थ्रू विकेट, आई थिंक रसिक सलाम को मिला था वो ब्रेक थ्रू विकेट, एंड उसके बाद तो लाइक इट ओपन्ड द गेट्स ऑफ हेल। उसके बाद बस प्लेयर आए प्लेयर गए, पूरा मिडिल ऑर्डर फेल हो गया। जो मैं इस मैच से पहले बात कर रहा था कि केकेआर का मिडिल ऑर्डर इज द बेस्ट मिडिल ऑर्डर इन दिस आईपीएल, रमनदीप, रिंकू, रसल, ऑल थ्री ऑफ देम फेल्ड। रिंकू सिंह हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट ही हैज नॉट बीन स्कोरिंग रन फॉर द लास्ट 2 years आई थिंक। 2023 में आईपीएल से पहले एक बहुत अच्छा फॉर्म था, 2024 में आईपीएल से पहले बहुत अच्छा फॉर्म था, उसके बाद जो फॉर्म गई है वो अभी तक तो आई ही नहीं है। आई एम अ ह्यूज रिंकू सिंह फैन एंड आई वुड वांट हिम टू स्टार्ट स्कोरिंग रन्स। अगर केकेआर, अगर रिंकू सिंह नीचे रन नहीं बना रहे, जस्ट गिव हिम अ कपल ऑफ गेम्स ऊपर ताकि वो थोड़े बॉल्स खेल सके, थोड़ा सेट हो सके। बट आई थिंक दैट इज ओके। जो ओनली पॉजिटिव्स रही है केकेआर की तरफ से, दैट इज अजिंक्य रहाणे एंड सुनील नरेन। उसके अलावा कुछ भी पॉजिटिव मुझे तो नहीं देखने को मिला इस मैच में। एवरीथिंग वाज प्रीटी पुअर। क्विंटन डिकॉक एक ही ओवर में 2 बार आउट हो गए। सुयश शर्मा ने एक बहुत ही आसान सा कैच छोड़ा उनका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कृणाल पांड्या। पहले ओवर पावर प्ले में दिया गया, वहां पे उन्होंने 15-16 रन कंसीड किए एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। अगले 3 ओवर में ही गेव अराउंड 13-14 रन, गॉट 3 विकेट्स ऑफ वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह एंड प्रॉब्ली रमनदीप सिंह इफ आई एम नॉट रॉन्ग। व्हाट अ फैंटास्टिक स्पेल ही हैज हैड। बिल्कुल गोल्डन डेब्यू हुआ है कुछ प्लेयर्स का। कृणाल पांड्या का गोल्डन डेब्यू हो गया, फिल सॉल्ट का गोल्डन डेब्यू हो गया, who else? सूर्य शर्मा was one of the guys जो he had a forgettable night, but उसने भी खुद को redeem कर लिया रसल का विकेट लेके। अगर वहां पे रसल का विकेट नहीं आया होता, then we would have been looking at a 195 टारगेट। अगर ये टारगेट 195 का हो जाता, then things would have been very different for us. I think एक चीज जो बहुत अच्छी देखने को मिली है कि वी वेंट विद अ वेरी काम हेड, वेरी ऐसा नहीं कि अगर एक तरीके से खेल रहे हैं तो एक ही तरीके से खेल रहे हैं। इवन जब हमें रन पड़ रहे थे तो भी रजत पाटीदार लुक्ड वेरी काम, वेरी कंपोज्ड। दूसरी चीज, पावर प्ले में हमने 80 रन बना दिए। उसके बाद देयर वर टू थिंग्स, या तो हम सुनील नरीन और वरुण चक्रवर्ती को भी अटैक करके ये मैच हम 12-13 ओवर में खत्म कर देते, बट हमने वी गेव रिस्पेक्ट टू द बॉलर। फिल सॉल्ट का विकेट गिर गया था, उसके बाद रजत पाटीदार को ऊपर भेज के वी कुड हैव ट्राइड टू एंड थिंग्स अ लिटिल बिट क्विकर, बट हमने वो नहीं किया। वी हमने थोड़ा प्रिकॉशनरी अप्रोच लिया है वहां पे, जो कि मेरे हिसाब से वॉज रिक्वायर्ड बैक उस टाइम पे। बिल्कुल प्रेशर नहीं था। अगर देवदत्त पाटिकल के रन वहां पे आ जाते, देन ही वुड हैव रन्स ऑन हिज बैक, जो पिछले 3 आईपीएल सीजन से नहीं बना पाया। पिछले 3 में नहीं, एक्चुअली पिछले 4 आईपीएल सीजन से उसके रन नहीं आए। तो वो एक जो एलिफेंट इन द रूम था वो एड्रेस हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली दैट डिड नॉट वर्क आउट वेल। बट रजत पाटीदार, राइट फ्रॉम द वर्ड गो, what a fantastic innings. Virat Kohli, what a fantastic innings. Phil Salt was the initial aggressor. वैभव अरोड़ा की बॉल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी स्विंग हो रही थी, बट who knows to cut the swing better than a English batsman. फिल सॉल्ट का बहुत ही अच्छा डेब्यू हुआ है। विराट कोहली पहले मैच से लुक्ड इन ग्रेट टच। कृणाल पांड्या, व्हाट अ फैंटास्टिक स्टार्ट। हु एल्स? रसिकदार, ओके, आई मतलब मुझे लगा कि शायद उसे उस पोजीशंस में नहीं खिलाया गया जहां पे ही वुड अपने आप को और अच्छे से पोर्ट्रे कर पाते, बट चलो नॉनदलेस आई थिंक भुवनेश्वर कुमार आएंगे, देन रसिक सलाम की जगह पर ही आएंगे। और रही बात द बिगेस्ट कंसर्न दैट आरसीबी हैज हैड इन दिस मैच इज सूर्य शर्मा। उसके बारे में बात कर लेते हैं, बट आई वांट टू नो योर ओपिनियन एज वेल। अबाउट सूर्य शर्मा पे बात करते हैं पहले। आई वांट योर ओपिनियन ऑन सूर्य शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द स्ट्रीम। डू यू थिंक, मतलब मैं तो चाहता हूं कि आप उसको चेपॉक में एक और मैच दो। उसको चेपॉक में एक और मैच दो। अगर वो चेपॉक पे भी नहीं चल पाया, देन आई थिंक वी कैन लुक अहेड ऑफ सूर्य शर्मा, क्योंकि वो चिन्ना स्वामी में तो डेफिनेटली नहीं चलेगा इफ इज नॉट परफॉर्मिंग इन ईडन गार्डन्स एंड चेपॉक। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? लिविंगस्टन मेरा भाई ने भी लास्ट में अच्छा ही किया। लिविंगस्टन मेरा दोस्त एक्चुअली। लिविंगस्टन फैंटास्टिक। पहला बॉल जो उसने फेस किया, बिल्कुल मीट, बिल्कुल डेड सेंटर पे लगी है। जो आवाज आई है बैट से वही सुन के समझ आ गया कि ये रोके तो नहीं जाने वाली। एंड इवन ही लुक प्रीटी प्रॉमिसिंग। बॉलिंग भी उसने अच्छी करी है। आई थिंक उसने 17th या 18th ओवर डाला था एंड ही गेव 4 रन्स इन दैट ओवर। सूर्य शर्मा को भी हम बिल्कुल डेथ ओवर्स में एक बार लेके आए, लग रहा था कि बहुत सारे रन कंसीड कर जाएंगे, बट वहां पे भी एक विकेट निकाल दिया, वो भी रसल का।
फैंटास्टिक गूगली, पढ़ ही नहीं पाए रसल एंड ही वाज चॉप्ड ऑन। कैप्टनसी रजत पाटीदार की अगर पहले 10 ओवर में देखी जाए, मतलब अगर ओवरऑल मैं कैप्टनसी बताऊं रजत पाटीदार की, तो इट हैज बीन वेरी वेरी एक्सपेरिमेंटिंग, बिल्कुल भी डरे नहीं है वियर्ड चेंजेस करने से। पहले हाफ में वो चीजें बिल्कुल बैकफायर कर गई, बट दूसरे हाफ में ऑल ऑफ दोस थिंग्स वर्कड आउट इन आवर फेवर। ये क्या आ गया? या ऑल ऑफ दोस थिंग्स वर्कड आउट इन आवर फेवर। चाहे वो कृणाल पांड्या को लेकर आना हो, चाहे वो सूर्य शर्मा की बॉलिंग रोटेट करना हो, चाहे वो राशिक सलाम को उस पॉइंट पे बॉलिंग देना हो, चाहे वो स्पिनर्स को लेट तक कैरी कराना हो। 18th ओवर आपने कब पिछली बार देखा था कि 18th ओवर एक स्पिनर डाल रहा है फॉर आरसीबी? यू नेवर सी दैट हैपनिंग। एंड लोग लेट अस while complimenting our team, let us also keep one thing in mind कि इस बार we have gone from a player big name heavy side to a effective guys 11, I would say। हम पहले बहुत ज्यादा रिलाई करते थे विराट कोहली पे, फाफ डुप्लेसी पे, बट इस बार शायद वैसा नहीं होने वाला। हमारी बैटिंग अभी भी टेस्ट होना बाकी है। हम हमारी बॉलिंग इस बार ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट, आई वुड से। भुवनेश्वर कुमार अभी तक खेले नहीं है। प्रथम यादव भाई स्पैम ना करें। आज वरुण भी नहीं चला, दैट डजंट मीन कि उसको निकाल दें। सेम गोज विद सुयश आल्सो, वी नीड टू बी काम विद सम प्लेयर्स एंड ही टुक रसल्स विकेट व्हिच कॉस्ट 20 to 30 रन्स लेस। आई एग्री टू दैट। जो लास्ट ओवर सुयश शर्मा ने डाला, दैट वाज फैंटास्टिक, बट आई डोंट नो, अब या तो बोल सकते हो कि ही वाज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर कंसीडरिंग पहले ओवर में उससे कैच छूट गया था। उसके बाद ही जस्ट डिड नॉट लुक लाइक अ वेरी ही वाज गेटिंग टर्न राइट फ्रॉम बॉल 1। उसकी बॉल स्पिन हो रही थी, बट आई डोंट नो, इट वाज आइदर रहाणे और सुनील नरीन गेटिंग ऑन टॉप ऑफ हिम। कंसिडरिंग वरुण चक्रवर्ती को मार पड़ी है, बट वो सारी मार उसको पड़ी है पावर प्ले में, जब उसको लाने का कोई सेंस बनता नहीं था। आई डोंट नो व्हाई अजिंक्य रहाणे उसको आगे बॉल दे दिया। अच्छा ओके, वेट अ सेकंड राघव। Yes. Okay. Wait a second. I'm sending a link. I'll get back to the stream. Yeah, I'm back. Apparently stream lag हो रही है। ओके, पूरा फ्लो ही टूट गया मेरा। कैन यू गाइस टेल मी व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट? अगले मैच में भुवी किसको रिप्लेस करेगा? इन माय ओपिनियन, देखो मैं तो चाहता हूँ कि इट शुड बी, आई थिंक आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको रसिक सलाम की जगह पे लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि सूर्य शर्मा खेले चेपॉक में। हैविंग सेड दैट, आई थिंक इवन रसिक सलाम विल बी अ वेरी हैंडी बॉलर एट चेपॉक, कंसिडरिंग आज वो, मैंने देखा है कुछ बॉलें वो 105 106 पे भी डाल रहा था, तो ही हैज अ फैंटास्टिक स्लोअर वन। आई थिंक ही हैज अ फैंटास्टिक स्लोअर वन, एंड आई थिंक चेपॉक में वो चीजें काम आती है। अगर आपको याद हो पिछली बार जब हम सीएसके से खेले थे, देन मुस्ताफिजुर ने 4 विकेटें निकाली थी, एंड इवन दो वी वर ट्राइंग टू हिट द डेक और अल्जारी जोसेफ शॉट पे शॉट डाले जा रहे थे, दैट डिड नॉट हेल्प अस, मे बी बिकॉज वी डिड नॉट हैव अ गुड इनफ टारगेट फॉर अस। एक चीज है कि वी हैड द मोस्ट हॉरिबल रन ऑफ फिक्सचर्स शुरू में। वी हैड क्या बोल रहा हूँ, अभी भी सारे मैचेस पड़े ही हैं, बट वी हैड टू प्ले ईडन गार्डन्स में कोलकाता को, जो आई थिंक 4-1 का रिकॉर्ड है हमारा इन द लास्ट 5 मैचेस वी हैव प्लेड अगेंस्ट केकेआर। आफ्टर दैट वी हैव टू प्ले अगेंस्ट सीएसके एट चेपॉक। उसके बाद वी हैव टू प्ले अगेंस्ट गुजरात, उसके बाद वी हैव टू प्ले गुजरात एट होम, एंड देन वी हैव टू प्ले मुंबई एट वानखेड़े। तो उसमें से एक काम तो हो गया, बट लेट अस कीप आवरसेल्व्स अंडर कंट्रोल, लेट अस कीप द एक्साइटमेंट,
within us. और लेट अस टेक इट वन गेम एट अ टाइम. नेक्स्ट गेम इज एट चेपॉक. हमने 2008 से वहां पे जीता नहीं है, एंड दिस विन वुड हैव हेल्प्ड अस. अभी हम सोच सकते हैं चेपॉक में जाके जीतने का, जो कि शायद अभी तक वी वुड जस्ट हैव इट इन अस कि क्या पता जीत जाए, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. बट दिस विन इज गोइंग टू गिव अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू गो एंड think of a victory against Chennai. Rasik has good variations, exactly. But Bhuvaneshwar has to come in. Now we have to think किसके जगह पे आ सकता है. If not Rasik Salam, I don't know who else can replace him. Considering Hazelwood ने तो शानदार bowling करी है आज. Even Yash Dayal death overs में बहुत ही बढ़िया कर रहे थे. So I am not sure आप भुवी को किसके जगह ला सकते हो if not Rasik Salam. आप बैटिंग में तो कुछ चेंजेस नहीं करोगे. आप आई एम प्रीटी श्योर आप बॉलिंग बैटिंग शॉर्ट नहीं करोगे. तो इट इज आइदर गोइंग टू बी रसिक और सुयश. मैं तो नहीं चाहता दोनों ही बाहर जाएं, बट ओके, दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव. सोचो भुवी के लिए जगह नहीं बन रही आरसीबी में, क्या लेजेंड होगा. हमें थोड़ा अपने आप को काम रखना पड़ेगा. वन विन, वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स. केकेआर को हराना, डिफेंडिंग चैंपियंस को हराना, वो भी इन दैट फैशन, शुड गिव अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. बट हमें थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा. अभी हमें चेन्नई को हराना है. दैट इज अ मस्ट विन गेम फॉर अस. पिछले साल हमने जितनी बकचोदियां करी हैं, या दोनों साइड से जितनी बकचोदियां हुई हैं, उसके बाद चेन्नई और आरसीबी वाला मैच इज अ मस्ट विन फॉर बोथ द साइड्स. एंड आई हैड अ क्वेश्चन कि चेन्नई कब जा रहे हो. आई विल गो ऑन 27th. बट अभी तक टिकट्स ही रिलीज नहीं करी हैं, तो यू नेवर नो. वन मैच एट अ टाइम, एग्जैक्टली. We will win in Chennai this time. I would hope so. आई थिंक अगर हम जीत गए और मैं उस टाइम स्टेडियम में मौजूद हुआ, देन आई विल कंसीडर माई सेल्फ एज गॉड्स फेवरेट चाइल्ड. बट आई एम ऑनेस्टली नॉट थिंकिंग अबाउट दैट मैच अभी. I only want to think about the match that has just happened right now. What a fantastic game we have had. बिल्कुल ही क्लिनिकल. बीच के 5 से 6 ओवर, फ्रॉम द 4th ओवर टू द 10th ओवर, वो जो 7 ओवर गए थे, नॉट इवन 4th ओवर में तो मारना उन्होंने शुरू किया था. वो जो बीच के 6 ओवर रहे हैं, फ्रॉम 5th to 10th, वहां पे लगा कि ये मैच हमारे हाथ से निकल रहा है. बट उसके बाद जो चीजें पुल बैक करी गई हैं, KKR was not in the game even for a single delivery. All right, who is the man of the match? अगर कोई मुझे बता सके. And I would also like to take a look at the points table. IPL ऐप डाउनलोड करना भूल गया हूँ मैं. क्रिकबल्स. कृणाल पांड्या इज द मैन ऑफ द मैच. ओ माय गॉड, वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस. फाइनली कुछ सेंस प्रिवेल कर रही है आजकल लोगों में. नहीं तो जनरली क्या होता है ऐसे स्पेल के बाद, क्योंकि सिर्फ 3 विकेट मिले हैं, 4 या 5 विकेट नहीं मिले हैं, तो इमीडिएटली आप सेकेंड इनिंग्स में जो हाईएस्ट रन स्कोरर होता है उसको दे देते हो. आई थिंक विराट कोहली इज द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर आरसीबी. तो आइदर विराट या तो सॉल्ट को मिल जाता मैन ऑफ द मैच. बट थैंकफुली दैट हैज नॉट हैपेंड. कृणाल पांड्या वाज द गाय हु यू नो changed the game for us, who is the reason we have won the match today. And yeah, a fantastic choice for the man of the match. आपने कितने साल बाद आरसीबी को डेथ ओवर्स में इतनी अच्छी बॉलिंग करते हुए देखा? ऑनेस्टली मुझे इससे पहले का मैच याद आता है प्रॉब्ली, या सीजन याद आता है, द वन इन 2020 जब हर्षल पटेल बॉलिंग कर रहा था, या 2021 जब हर्षल पटेल ने 32 विकेटें निकाली थी. बस वही एक टाइम था जब ओ माय गॉड, आई थिंक वही एक टाइम था जब आरसीबी ने डेथ बॉलिंग अच्छी करी थी. उसके बाद तो मुझे याद नहीं आता. हमेशा मार ही खाते रहे हम. कृणाल पांड्या और कोहली का अग्रेशन. 2.137 नेट रन रेट, और पहले मैच के बाद वी आर एट द टॉप ऑफ द टेबल.
after defeating the reigning champions, उनको उनके घर पे अभी तक 4-1 चल रहा था लास्ट 5 मैचेस, अभी भी शायद 4-1 ही है कंसिडरिंग हम बिल्कुल पांचवा मैच ही जीते थे उनसे। बट अगर आप पिछले 12 मैचेस का देखो तब शायद द स्कोर लाइन इज 6-6 इन द लास्ट 12 मैचेस वी हैव प्लेड अगेंस्ट केकेआर। 2015 है ओवरऑल हेड टू हेड, बट अभी हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी एंड वी हैव टू बेटर ऑल द रिकॉर्ड्स। वी आर ऑलमोस्ट, आई थिंक हर टीम के अगेंस्ट ही हम खराब हैं। ओवरऑल रिकॉर्ड की अगर बात करें, हेड टू हेड की बात करें, वी आर ऑलमोस्ट बैड अगेंस्ट एवरी टीम। अभी पिछले 4, एक्चुअली पिछले, ये छठा सीजन है, पिछले 6 सीजन से थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आई है with our wins, with our team, with our playing style. Or I think this is the time we have to take matters in our own hands. रही बात कोलकाता की, तो द थिंग इज जो उन्होंने चेंजेस किए हैं पिछले साल से, चलो फिल सॉल्ट की कमी तो साफ साफ आपको नजर आ गई। क्विंटन डिकॉक ने आपने पहले ओवर में विकेट फेंक दिया। इवन दो क्विंटन डिकॉक हो सकता है कि इज वे पास्ट हिज प्राइम, बट ही विल बी एबल टू काइंड ऑफ रेप्लिकेट व्हाट फिल सॉल्ट हैज डन। प्रॉब्ली आपको वो कंसिस्टेंसी नहीं दे पाएगा, बट वो स्ट्राइक रेट वो जरूर दे सकता है। लाइक अगर आपको याद हो, इवन व्हेन ही यूज्ड टू प्ले फॉर मुंबई और लखनऊ, वो इनिशियली बहुत अच्छा स्टार्ट दे देता था, बट ही वाज नॉट एबल टू स्कोर लॉन्गर। कुछ इनिंग्स आती थी जब वो चले जाते थे 140 रन बना देता था, कुछ एबनॉर्मल कर देता था, बट दैट वुड हैपन 1 in 100 गेम्स। तो क्विंटन डिकॉक स्ट्राइक रेट वाइज माइट इक्वलाइज विथ what Phil Salt had done, बट उसके अलावा एवरेज वाइज दे विल ऑलवेज स्ट्रगल, जिसके कारण अगर फिल सॉल्ट जल्दी अगर क्विंटन डिकॉक जल्दी आउट होगा, देन दैट प्रेशर विल कम टू सुनील नरीन। अजिंक्य रहाणे के साथ बहुत अच्छा हो गया दैट ही हैज इमीडिएटली गॉटन ऑफ द बैट। इमीडिएटली उसने ही अग्रेसिव खेला, उसी ने वही लेके चला गया। ही इज द वन हु मेड द मैच फॉर केकेआर। ये जो 170 रन बने हैं, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ हिम। अभी देखो अगला बैट्समैन वेंकटेश अय्यर, आई थिंक अ लॉट ऑफ प्राइस टैग प्रेशर फॉर हिम। बहुत ही ज्यादा पैसे दे दिए गए हैं, चाहे आप जितना भी बोलो कि प्राइस टैग डज नॉट मैटर और सब इक्वल है टीम में, वैसा नहीं होता। इफ यू आर गेटिंग 25 crores, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ एडिशनल प्रेशर ऑन योरसेल्फ कि आपको अच्छा करना ही है यहाँ से। एंड आई गेस दैट इज द रीजन ही फेल्ड टुडे। मैं ये नहीं बोल रहा कि थ्रू आउट द सीजन अच्छा नहीं करेगा। द काइंड ऑफ प्लेयर वेंकटेश इज, वो अच्छा वो ही विल इवेंचुअली कम बैक ऑन ट्रैक एंड स्कोर एंड स्टार्ट स्कोरिंग रन्स। Rinku Singh is a concern from my side. Ankush Raghuvanshi is not at all a concern from my side, considering बिल्कुल ही young है, and आज जो उसने innings खेली है वो उसमें भी बहुत ज्यादा flair था। Ramandeep Singh will eventually start scoring runs. Andre Russell will eventually start scoring runs. Bowling इनकी बहुत तगड़ी है, and they are a good contenders for the top 4 spot. I think probably they might just slip, they might just finish 5th. But आप इस टीम को, मतलब मैं उसको बोल रहा हूँ जो अगली हु इज द नेक्स्ट टीम, जो नेक्स्ट टीम है केकेआर को खेलने वाली, वो ज्यादा लाइटली ना ले। आई थिंक केकेआर बिल्कुल ही आज तो आउट परफॉर्म हो गए हैं, but this is not going to happen every single day. Now I am looking forward to how this team responds. Andre Russell तो आज बिल्कुल ही दिखाई नहीं दिए। It did not even come to bowl. Is he 100% fit to come to bowl? That is going to be a concern. And I'll take a couple of comments and then I'll wrap the stream up. छोटा सा stream करने का मेरा plan था. And whoever has not liked the stream yet, please do and subscribe to the channel if you haven't already. Phil Salt plus Virat is equal to visa for bowlers plus add Rajat Patidar. एक चीज है, did you guys like Devdutt Padikkal to be sent at 3? मेरे को मिक्स्ड ओपिनियंस थे। जब विकेट गिरा तब मैं चाहता था कि पाटीदार आए बैटिंग करने, कंसिडरिंग कि बहुत सारे ओवर्स हो चुके थे एंड स्पिन उनके बेस्ट स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे, तो व्हाई नॉट पुट योर बेस्ट बैट्समैन इन फ्रंट ऑफ देयर बेस्ट स्पिनर्स। बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि अगर यहाँ पे पाटीदार अग्रेसिव खेलने जाता और वहां पे आउट हो जाता, देन थिंग्स वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफरेंट। I have Raghav with me here, joined at a very bad time when I was about to wrap the stream up. Uh, okay. I want you to take the screen orientation off
और फोन को लैंडस्लाइड में रखो so that your entire your full screen comes. मुझे लगता है DDP 350 प्लस तो बना ही देगा, बट किस स्ट्राइक रेट पे बना देगा? दो चीजें थी, वही बात है। एक तो था कि शुड यू ब्रिंग योर बेस्ट स्पिनिंग बेस्ट बैट्समैन अगेंस्ट स्पिन, या तो फिर आप डरते कि यहाँ से अगर रजत पाटीदार आउट हो जाता है देन दे माइट गेट अ चांस टू केकेआर माइट हैव अ चांस टू गेट इन। प्रिकॉशनरी थे एंड आई वाज प्रीटी ओके विद दैट, कंसिडरिंग द मैच वाज इन योर कंट्रोल और आपको कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव करने की जरूरत नहीं थी। यू कुड हैव वन द गेम इन 15 ओवर्स परहैप्स, बट दैट इज आल्सो फाइन। देवदत्त पाटिकल को भी थोड़े रन्स मिल जाते हैं। एग्जैक्टली दिस इज हाउ आई वांट टू कीप योर स्क्रीन। Yes, perfect. Don't have to change anything. Tell me, brother, how was your experience watching this Yeah, match? yeah. First of all, I love your videos, and I have been Thank you watching so much. you from. I think I saw you 2 or 3 months ago. You are doing beautifully. And coming to this match, uh, RCB, superb victory by them, and especially their death bowling. Josh Hazelwood hitting the hard length was massive there. So your thoughts on that? I think he was hitting the hard length right from the word go. I think he was not looking for a lot of swing even in the initial overs. That was something we do not see very often, and that worked out very well. And I think that we had we did not come up with preset plans. I think we had a lot of matchups in our heads. Probably that was the matchup against Quinton de Kock, going with the hard length initially. We had even getting Krunal Pandya when Ajinkya Rahane was batting. Even I think that was a matchup that did not work for us. Later on, even when the spinners were getting a lot of grip, that was again very unusual. I think in the latter end of the first 20 overs, and Rajat did not get scared of giving the ball to the spinners in the 15th over or the 16th over. I think even the 17th over was bowled by a spinner. Liam Livingston bowled the 17th over. I think that is something remarkable. I would say that could have backfired. The target could have been 220, but he had the courage. I was going to use another word for that, but he had the courage to give take the punt, do uh, gamble it all, and it worked out well. I want Yeah. you to answer one thing. Yeah, I would like to Sure. ask you the same thing again. What is your opinion on Devdutt at 3? Not about this match, about the games to follow. Yeah, Dave, that at three is sort of concerning for me. If you look on the track record, Dave, that Padikkal batting at number three hasn't been great. So, especially against spinner, the strike rate of Dave that Padikkal is less. So, Yeah, yeah, I think it is around 110 odd, and especially when Varun Chakravarti, Sunil Narayan is bowling, it is a bad time to let in Dev that Padikkal there. So I thought that a youngster would make Aswastik Chikara as an impact player would make a huge difference. And they have a Manoj Bantake there in the lower order would make a huge difference. I would like to see Patida at three, number four Livingston. When there is a good start, I would try to bring Livingston at number three and to say him go bash the deliveries. So right, there that right. at number three is a crime according to me. Yeah, I think the only reason that Devdutt is playing at 3 is because he scored a lot of runs in the intra-squad match. And Yeah, you never know, maybe he'll just find his form back when he comes to Chinnaswamy. But even when he was with RCB back in the day when the IPL was played at UAE, his strike rate was still a concern. He was a fantastic batter in the power play, but as soon as the field restrictions would open, he would find himself getting stuck in a rut, was not able to find gaps, was not able to get that boundary. One thing that he did very well is that the only boundary he has scored, he found the gap brilliantly. Now I don't know if I can take that as a sign that he is improving as a batter, but I think that you can probably give him one more match at Chepauk, and if it does not work out, then I think you should just change your plans and try to get in another player who has proved himself that he can who can hit at a better strike rate.
Another question for you: who comes in? Sorry, who goes out for Bhuvneshwar Mm, sorry, I couldn't understand that. when Bhuvi comes in the next match? Who will go out? Uh, I think they have to leave place for Rasik Salamda would go out and Bhuvaneshwar Kumar will come in, because I think in they are playing at Sepok next match, and two spinners are must there. Krunal and Suyas will play, so they have another leg spinner Mohit Rati. If they see the wicket spinning a lot before the match, I think Swapnil or Mohit Rati will come in. So I think I'll drop Rasik Salamda, bring in Bhuvneshwar Kumar. So I think Yash Hazelwood will bowl the death for me. Even I would try to bowl one over with Bhuvneshwar Kumar as well. So Bhuvneshwar Kumar and Hazelwood in the power play can be deadly. You don't know. In the next match, Sepok, Ruturaj Gaikwad versus Bhuvneshwar Kumar is gonna be a key matchup, as well as Hazelwood Yeah, versus Conway. This is gonna be a match defining matchup according to me. So Rasik Salamdar, I think Rajat Patidar did a mistake bringing in Rasik Salamdar in the power play. If you see in yeah, Delhi, he bowls after the 10th over, and yes, he came in the he bowled in the death. I think most probably 12, 14, 16, 20. I think Rishabh Pant gave him like that. So he has to bowl in the middle overs and death. So I think I would drop. And Rasik Salamda is a great youngster. And in the Asian, I think in the emerging Asian Cup, he did yeah. brilliantly. So, but it is a hard decision there. Just Dayal is a retained player, bowled death today really brilliantly. So, Yes, there I think did not even give you an inch. Like you cannot even point out a single delivery where you can say that okay, this was not right. I think he got hit in the fifth over or the sixth over when he came into yeah, bowl. for But Ajinkya Rahane Indian I'll team. give him one over because Rahane and Nareen, both of them were pretty set at that point. Yeah, so Yas Dayal will be a must, as he's also a retained one. I think he didn't do a lot of mistake today. So Rasik Salam, it is a harsh decision and it's a hard decision first of all. But Bhuvneshwar Kumar is an experienced guy, and yeah, so I would bring in Bhuvneshwar Kumar. Yeah, what are your thoughts on say okay, let's leave the Chepok match aside. Let's probably go just make this one change, get Bhuvneshwar in for Rasik and play that game. But when we come to surfaces like Bangalore or Wankhede, what is your opinion on getting Suyash out for Rasik Salam, playing with four Yeah, pacers, and then in place of Devdutt you can get Swapnil? yeah, that is a beautiful point said by you. That was also in the thought of mine as well. So in Chinnaswamy, you need pace. It is a small boundary, especially the square boundary. If you have seen, it is a very small ground. So I think it would be a straightforward decision. As also Swapnil is a beautiful bowler in the power play as well. Yeah. That is a key point you have to note, as well as you can define many matchup there, and record of Swapnil in power play has been terrific. So Yes. Swapnil, I think Swapnil in the power play would be a very useful choice, especially against right-handers. Swapnil's average is great, is around 20 odd. So yeah, The comment says Rasik can give deep batting if things go south. Another point favoring Rasik is that not even the deep batting. Probably, if we play all three of them, Yash Dayal, Hazelwood, and Bhuvneshwar, the pace attack kind of gets very, unidimensional. All three of them are new ball. All three of them are the ones who prefer new ball bowling. What happens if the new ball, we fail to get wickets with the new ball? There are two set batters and they're bashing us. Do you think Rasik will be missed back, if something like that happens? I think first of all that is a less chance of least chance of happening there. That is my opinion there. But I think Rasik Salamdar can be useful. I think I would have him as an impact player. Swapnil Singh. So these guys will be my impactors when needed. When that situation comes, I'll let them. And the another thing the team is doing wrong, even though
today Devdutt Padikkal came as an impact player of a guy like uh, uh, who I think Rasik Salamda went out, right? No, I Suya think Sharma. Yash there, Suya Sharma. Suya Sharma. Yeah, Suya Sharma went out. So even though Devdutt Padikkal is a better fielder than Suyas, I think Suyas must have continued. And according to the situation, match situation, would come you in the batting. So initial decision could go wrong. So I think I have seen in the past years. So according to the situation, the team must use the impact player wisely. So if you see when needed, I think last year Dhruv Jural for RR came in bash deliveries. What if they had take a bowler already on an impact list? So yeah, impact player must be decided at that time. And if you look on the fielding side, fielding, yeah, you need a good fielder, but uh, in the day you people will not check your fielding. They will first of all check your batting and scores. So yeah, another thing of bringing in Devdutt Padikkal was he is a left-hander at number three. If you look on the top Yeah, five, there are no left-hander, yeah, so that is a right and left combination which can work and give some tension to the field setup as well as captain, yeah. because they must need to change the field setup here and there for every ball if they score singles. That is a lot of tense. Yeah. So next match, my opinion is I would rather prefer Swastik Chikara or Manoj Bandage as an impact player. I think I will pick Krunal Pandya at number 4 or number 5 if they need it. So yeah, this will be my thought on this. Yeah. I think to wrap things up, I would want to add in a couple of more points. Is that yes, we played fantastically, but we also need to take one thing into our mind, that we got lucky with the toss. It was a very toss heavy ground. We bowled first. If we had batted first, things would have been very different. If we had batted first, things would have happened the way it had happened back in the day, probably last year. Um, Apart from that, we did not get to see a lot of our lower order get to batting. We did not see Krunal's batting. We did not see Jitesh's batting. We did not see Tim David's batting. We did not see a lot of Liam Livingston's batting. So I think that might also be something that we need to think about. I think we should keep ourselves grounded. Two very important points. If we think about the last season, we would know how important even a single point is. Uh, Keeping that in mind, two very very important points. In the last 6 games that we have played, we have won five. Actually, in the last 7 games we have played, we have won six. So Yeah, yeah, we are on a very good run, and we have to take. We have to just give me 1 second. yeah, sure. You can take the comments till Yeah. then. One sec. I'll so a comment by private number. Devdutt Padikkal will gain confidence batting with Virat Kohli or Salt. Yeah. End of the day, is this? It is not about mostly. It is about the way you play. A tactical analysis, a tactical decision is needed. So yeah, with batting with Kohli, it will give you a lot of confidence. Batting with Salt will give you a lot of confidence. But what is your role playing that game? So yeah, private number, I would just agree with your point partially. So I am not convinced with that. And track record of Devdutt Padikkal at number 3, if he opens, he's a good player, but that strike rate concern in the modern day T20. Yeah, in the modern day T20 cricket, I think Devdutt Padikkal's strike rate in opening is just 128 or 135. So in that bracket. And number 3 for Rajasthan Royals, numbers are not great last 2 years. So he must open. He's a good opening batter. And in Smart, he used to do well. and 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 I think intra squad matches will
it is a kind of different dimension according to me. Yeah, yeah, It tests all your batters, but match day, what are you gonna do at match? People are not gonna say how you are gonna perform in the intra squad, how you have performed in the intra squad match. So that will not come under the case in at last. yeah. And analysis, so that analysts play a vital role in that team. So Devdutt Padikkal at number three. I am not a guy who likes Devdutt Padikkal at number three, in It's a especially in track this record that modern day makes, right? T20. It's the Yeah, track record that it's the track record that makes this opinion. Like he has never performed at number three or number four. We have seen it in Rajasthan a couple of seasons. We have seen it in Lucknow. The Lucknow season was horrendous, heartbreaking for a fan to watch. And imagine playing a lot of games just because you scored runs in the intra squad match. Imagine scoring 80 runs against half of RCB's bowling lineup. Imagine not even the entirety of RCB's bowling lineup, the half of it. So, I have a lot of respect for Devdutt Padikkal. He is a fantastic player, very technical. Had the injury not happened, he would have been, probably a regular starter for India, considering the way he started back in 2020, 2021. But things are not the same right now. He has to prove himself for us to get convinced that he's the right guy for the number three position. Was it right to send him today at three? I think it was, considering we the squad had expectations from him, and we would get to see how he plays when there was absolutely no pressure. You just had to rotate strike. He found a good boundary, but was went to hit a six of, I think, Varun Chakravarti. Who did he get out to? Uh, yeah, Varun yeah, Chakravarti. and then just threw Yeah, his no, wicket. no, I And think it not only that, is you had to count Sunil him Narayan. immediately. Sunil Narayan Give got him a his wicket. Sunil Narine got Sunil his wicket. Narayan, Yeah, so Sunil Narine has taken a wicket against RCB every single time he has played against us. So we had this one opportunity to go clean sheet against him, and we failed. I think DDP's role is going to provide stability and play aggressive. That is the thing, right? I can agree with the stability part, that he can be the anchor for you, but I think the T20 game has moved way past anchoring role. When you're playing against a team like Sunrisers Hyderabad, which we will eventually, and that will happen on, I think, 13th of May at Bangalore, if he comes out to play as an anchor, we are done for. yeah, absolutely right. And if they that perform next match, if he plays in and if he perform in number three, I would be the happiest person. But that Padikkal, and this is the modern day T20, right? Intra squad records doesn't matter according to me. It is a day that you perform well. It is not. It will not come under your records. People not gonna see those records. And Ishan Kishan, if you look upon, he has scored three massive 70s, 60s with a huge strike rate of 210, 220. But if he Yeah. first match, if he go out in the duck, so what people will say? So that is my sort of concern. And I think if he perform, I would be the happiest one. But the strike rate is a sort of concern in him. And in the modern day T20, anchoring role. You perfectly said that anchoring role. I think is not needed. Number three, if you see Ajinkya Rahane, did do the anchoring role? No. Not And Ankush Raghuvanshi, he tried to go hard. Venkatesh Iyer, first two ball, he just took singles and he tried for a hard shot. So anchoring in T20 cricket, yeah, sometimes it is needed, but not sort of condition like Eden Gardens. So ball will come onto the bat. If in Chepak anchoring, yeah, I would say okay, anchoring is sort of needed. Low scoring, it is kind of low score stadium. If you look upon players like Basto, for example, I'm saying Maxwell, they couldn't strike much because it will come slow. The ball will drop. It will not come onto the bat. So in that kind of situation, a technically sound batter like Devdutt Padikkal will be useful according to my opinion. But at Sepok, Devdutt Padikkal, I'm in a sort of dilemma, right? Yeah, I mean, you can have your dilemma, but I think that uh, a typical
IPL decision will be taken in the next match is that do not even tweak with the playing winning 11, and I think that is right in some ways. David Padikkal did not have a horrendous show today. He was slow. He was not. He could have batted a little quicker. We would have ended the game probably an over earlier. But I think we can give him another go. There are comments like we can make Chinnaswamy play at Chinnaswamy. Sorry, DDP play at Chinnaswamy. I think this is possible, but I cannot give him 4 matches at Chinnaswamy. I can give him 4 matches. That's all. That will include a match at Wankhede. That will include a match at Chinnaswamy. Those two are absolutely batting paradises, and they are the only two opportunities he can get if he does not perform. And by perform, I do not mean score a 50, score a 60, score a 70. I mean bat with a strike rate of above 150. If he manages to do that, I will any day prefer Devdutt over Swastik Chikara, considering he has. I have not seen Swastik bat, but Devdutt is the most technically sound guy. If he can replicate the same thing with the 150, 160 strike rate, I'm having him ahead of Swastik. He can also give me the left hand angle. Uh, what are your opinions on Suyash and Krunal with Liam bowling spin and Chipok after RCB's first match? I am very happy with our spin attack, especially Krunal Pandya. First over, he was given in the power play, probably found himself awestruck that he was not even. I don't think he was expecting himself to bowl in the power play, especially when Sunil Narine was in there. The good thing about Rajat's captaincy was that he kept Krunal's remaining 3 overs until Sunil Narine got out. Till Sunil Narine was at the crease, he did not bring Krunal back, which was fantastic. I really like Krunal's bowling. I really like the way Suya showed his heart in front of Andre Russell. But the first 3 overs were painful to watch. And Liam bowled really well. But the thing is, do I trust Liam with the ball in hand or even the bat in hand that he will give me consistent returns? The answer is no. Will it happen at Chipok? Most likely, yes. But I would like to see a little bit of a Swapnil Singh. Not at Chipok, but at Chinnaswamy. Your thoughts? Mm. Yeah. So Swapnil Singh in power play can be deadly. Even he could in I think he could incorporate in the middle overs as well. So yeah, one second. Tell me what I was talking about. अगले मैच में भूवी किसको रिप्लेस करेगा इन माय ओपिनियन? देखो मैं तो चाहता हूँ कि Wait, give me one. Yeah, continue. So Swapnil Singh, yeah, I think I would prefer Swapnil Singh rather than uh, uh, I would prefer Swapnil Singh any day in Sinaswamy. Sorry. At Sepok, I prefer Swapnil Singh. In Sinaswamy, I would try to bring in Swapnil in place of Riyaz Sharma, and Yeah, I would have a guy like Rasik Dar if uh, the thing sort of didn't go well for the fast bowlers that day. So this is my opinion on that. yeah. And if you see Huh. to today's Patidar's captaincy, when there is a double breakthrough or a single breakthrough over, next over he brought in Liam Livingston. So the Yeah. superb. Easy, he just gave him the easiest overs and just pushed those 2 overs, which was a great choice by Patidar. Yeah, great start by Captain Rajat Patidar is how I would like to end the statement. We spoke a lot about the weaknesses of RCB. That is a good thing. We are not getting ahead of ourselves after a fantastic crushing victory. We just had a great win, and we probably gave 30 minutes to the weaknesses that we had. Probably because we know that one win or two wins is not enough for us. We have to go all the way. We have to finish probably top two. You never know. In order to keep our hopes alive for the things that shall not be named. Uh, yes, a great start. Let us keep ourselves grounded. We are going to Chepok. We hate that ground. We have never won at that ground for 17 years now. And it is going to be, you need a little bit of magic to defeat CSK. Even though this CSK unit has become human in since the COVID days, the last 5 years they have not qualified thrice. I think uh, this is the perfect opportunity to beat them at Chepok. Let's not get too ahead of ourselves. We have seen our team. We are yet to see them. They are going with
a very weird kind of a playing 11 tomorrow. They might have Rahul Tripathi or a Deepak Huda or Vijay Shankar or probably a couple of those guys in there. They might have Jadeja and Ashwin and probably even Noor Ahmed, three spinning options, which are any day better than our three spinning options. You'll have to see how Chepauk works. We'll have to see the ground, the pitch, the playing 11, and then decide, if we have to make any change. Maybe, do not tweak with anything. Just go with the same 11. Do not even have to bring Bhuvi in if he's not 100% fit, if everything is fine. Yes, that is it for now. Thank you so much, Raghav, for joining. Had a Thank you so wonderful stream much. with you. I'm looking forward to having you more often on this channel. And all the best to you as well. I've seen your channel as well. Quick converse with Raghav if you guys have Yeah, not watched him. I'll put in the link in the description of the stream after the live stream ends. Thank you so much for coming. Thank you so much all of you guys for showing up. And I'll not be doing a stream in the next game because most probably, if touch wood everything goes right, I will be at Chennai, and probably I'll go watch the match. I will try to put up a bit of a content here and there, but yeah, that is all you're going to get. Thank you so much for thank showing you. up. Thank you Thanks so for much this for liking. Thank you opportunity. so much for yeah. Yeah, thank you for this opportunity for coming to This your is not an channel. opportunity. You can come anytime you want. That this is not some Yeah, huge thank thing. you so Thank you much. so much. Thank you so much. Yeah, thank you so much. I'll see you guys in the next one. Bye bye.